हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज महवाश अजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। मेरे साथ हमेशा की तरह ड्रामा गप में मौजूद हैं सदफ हैदर, जो कि अपने जेट सेटिंग वेज में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे मजा आता है when you say I'm a jet setter, वो यू right? आर, यू आर। I'm just visiting my parents. वेल यू आर। तो सदफ जो है वो It हमारे लिए involves a lot of dishwashing and सदफ cleaning and स्टॉप cooking. डी ग्लैमराइजिंग इट। आई मेड यू अ जेट सेटर, मैंने आपको किम कार्दाशियन बना दिया है आप। Yes, हाँ, yes. आप जो है वो खाम खा में जो है वो हॉय पलॉय में आ गई। नहीं नहीं, सदफ जो जेट सेटर सदफ जो है वो हमारे Of साथ course. ज्वाइन कर रही हैं और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला हमेशा की तरह। उनका बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी है हमारी सदफ। और सदफ, आपको पता है आपको रिक्वेस्ट भी आई कि आपको एक रोमांटिक नहीं फनी कॉमेडी, स्मार्ट कॉमेडी लिखनी चाहिए, तो आप जरूर लिखिएगा कभी। मुझे I think, if I could do something, but I have to take time off from social media and getting like triggered by it, right? Yeah, I've That would deactivated be Twitter because of harder. it. I was like, I have to Yeah, do my work. I cannot sit on Twitter yeah. and get aggressed and, get like aggrieved by random things which strike me. Which is like someone said it on Twitter, so what, right? So Yeah, I know. But I think वो हम पार्ट हो गए हैं बहुत पुराने। We're like hooked into the system for a very long time. So that's that. that's true. हमारी जो आज का डिस्कशन है गाइस, जेंटलमैन का फिनाली हुआ है। कभी Mm-hmm. मैं कभी तुम की रीसेंट एपिसोड्स के ऊपर हम बात करेंगे। हानिया आमिर गई स्टेज पे दिलजीत दोसांझ के साथ, तो क्या क्या ही मोमेंट बना, वायरल मोमेंट बना। दुनियापुर एंड नादान, टू वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामास। दुनियापुर ऑन ग्रीन टीवी एंड दानिया एंड नादान, which is written by Saji Gul, produced by Sultana Siddiqui, a part of her mini series, triple part mini series, a triptych in a way, जो कि उन्होंने पहला बनाया मंजो की, और अगला वो अब ये है, और तीसरा नीलो नील है विद दानियाल जफर एंड सजल अली। फिर हम थोड़ा सा जफा के ऊपर भी बात करेंगे, और एक हॉट टॉपिक जो हर थोड़े दिनों बाद निकल आता है और फिर निकलता रहेगा जब तक फवाद खान की फिल्म रिलीज नहीं होगी, वो ये है कि आखिर मसला क्या है भाई। क्या क्या बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है सब इसके ऊपर। कुछ लोग बहुत लाइक हाँ ठीक है, क्या कर रहा है तो करने दो, कोई मसला नहीं, हम कौन Mm-hmm. होते हैं बोलने वाले। और मैं उस कैंप में हूँ, ऑपोजिट कैंप में हूँ, कि भाई बकौल आप सदफ, आपके हमारे चांदी का थाल है और हम उसके अंदर जो है वो पत्ते भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं। एनीवे, वील स्टार्ट विद जेंटलमैन्स फिनाली। सदफ, योर टेक। Mm-hmm. Okay, I'm one of those silly people that got emotional, started crying, सेम। and switched off the TV. And then what happened was everybody was going, Sadav, you do know that he's alive. स्पॉइलर अलर्ट, इज अलाइव। यस 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 यस। मुन्ना इज, लॉन्ग लिव मुन्ना। मुन्ना जी, मुन्ना is alive and मुन्ना जिंदा है. मुन्ना जिंदा है, हाँ। भुट्टो का तो पता नहीं, मुन्ना जिंदा है पता। लेकिन Yeah. ये कि ये जो ट्विस्ट था ना, मैंने भी मिस कर दिया था। मैंने तकलीफ में परेशान हो के ट्वीटें शुरू कर दी, मैंने तो मैसेजिंग शुरू कर दी। मैंने कहा या अल्लाह, मर गया, मैं तो फुल मैयत का मातम मना लिया उसकी। और फिर उसके बाद जब मैंने कहा एक मिनट यार, कुछ लग रहा है, कुछ रहता है एपिसोड में, क्रेडिट्स रोल हो गए थे। तो वेरी स्नीकी मार्वल थिंग दे डिड वाज लाइक, पोस्ट क्रेडिट्स में उन्होंने हमें एक असली कहानी सुनाई। और मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, इन हाउ ब्यूटीफुल हुमायूं लुक्ड, ऑल Hmm. बैक फ्रॉम द डेड। What is your take otherwise, apart from this big plot twist? Let us I enjoyed that serial, but I think as a whole, when you Hmm. see पूरा सीरियल आप देखते हो, देखो जब आप पार्ट्स देख रहे होते हो, you have an Uh, opinion on every episode, hmm. right? Now, हाँ, तो when now is a you good point to kind of look at it as a whole. Now right, it's what finished. went Okay. right and what went wrong. ठीक What है, went let's right do was it. Humayun, right? Okay. हाँ। Perfect choice for this. I think that Adnan Siddiqui was great. I loved the entire cast. I think Zahid Ahmed, excellent. All of these people were great, but I think that Yumna looked a little too young. And this is something we were all worried about. She's a good actress. I don't hate her. I know the Yumna fans will come after her. And to, when she was on her own, जब अकेली थी, सीन सब ठीक थे, right? Hmm. लेकिन I think her and Humayun do not make a pair, Okay. right? And I think, as you have stated throughout, and I agree with you, is that Khalil Rahman Kamar underwrote her role. I think there was less meat for her. She's a fantastic actress, and First, I can't yeah. say the word actress. देखो, actress नहीं मैं कह पाई. Hmm. अदाकारा So कहते हैं, she, अदाकारा। yes, Adakara. She is हाँ। actually a very good Adakara. She Hmm. handles most roles really well. Hmm. And but this kind of like I don't know, it's strange Hmm. because screen chemistry बहुत I think ट्रिकी चीज होती random. है। Yeah. You look at Aiza and Danish Temur, they Hmm. are so much in love. They're mashallah beautiful married couple. When on screen, थोड़ा कम ही Yeah. होता है.
right? Yeah. And they look better with other people. So Hmm. I think it is a random game. But I loved Hysam's direction. But Hmm. I will Hmm. say one thing, that we needed less episodes. Okay, Yeah. this needed to be very sharp and very strong. And I'm बताएं what like now you've seen the whole serial, right? Hmm. Hmm. What do you say? I mean, the finale was amazing, but फिनाली तो अच्छा था बिल्कुल, मुझे फिनाली से कोई मेजर मसला नहीं था एज अ फिनाली, जस्ट एज अ फिनाली ऑफ अ मेजर सीरियल। मुझे आई थिंक इट वाज प्रीटी वेल डन। आई थिंक द डायलॉग्स आर वेरी गुड, वेरी इम्पैक्टफुल। और अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स देयर कि वही मिफ्रा की इन्वॉल्वमेंट, वो तो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वो अगेन, hmm, वो जब फीमेल कैरेक्टर लिखते हैं तो वो उनकी उनके दिमाग में बस लोग एवं ही कर रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं, उनका कोई मतलब सेंस नहीं होता कि औरतें जो काम करती हैं वो क्यों करती हैं। तो वो उसकी बहुत ही वेफर थिन किस्म की एक्सप्लेनेशन देते हैं वो, विच इज अगेन वेरी वेरी केयर क्यू। सो चलो उसको भी हमने छोड़ दिया। ओवरऑल फिनाली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टेड, वेरी नाइस आइडिया टू ब्रिंग दैट लिटिल ट्विस्ट बिकॉज इट गॉट एवरीबडी टॉकिंग एंड एवरीथिंग। hmm. ओवरऑल एज अ शो आई थिंक दैट 100% agreed on your point के it should have been definitely 10 episodes shorter. It should have been a mini series. In fact, mini series होती तो बहुत कमाल होती, मतलब mini series होती तो Limited लिमिटेड series. सीरीज 9 एपिसोड्स 10 12 13 एपिसोड्स कमाल करते अगर 12 13 एपिसोड्स वाला होता फॉर्मेट। लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया और उन्होंने उसको करते रहे स्ट्रेच, उसको आगे ले जाते रहे विच again I think got it, that momentum and that power of the story got lost. It took too long for Munna to fall in love with Zarnab. Zarnab and Faris kept going in the same loop, तुम मुन्ना को छोड़ दो, तुम मुन्ना को क्यों कर रहे हो, तुम मुन्ना को छोड़ दो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तुम इससे शादी कर रहे हो, वो तो that same loop kept going on for a very long time. So definitely I think that it could have been such a memorable अभी भी है, लेकिन वो एक next level It चीज could have चली been a जाती। lot sharper. If you Lot think sharper. about it, Dekho, I think Haitham is known for his period work. When Haitham did Dastan, he was known for, oh, ये बंदा जो है ना period work बड़ा अच्छा करता है. He did Akbari Askari, अच्छा ये बंदा जो है ना comedy बहुत अच्छा करता है. But I mean, a lot of things you'll notice. I think why जो बिछड़ गए, now he's like, oh, political thriller बड़ा अच्छा लिखता है, right? Because जो बिछड़ गए not लिखता बनाता है, right? जो बिछड़ गए was a political thriller. And I think this is what Humayun and his team wanted to carry on. Because basically this, what do you say? Gentleman was a political thriller. Hmm. Right? Now, the thing with political thrillers, you have to edit things, you have to be very tough. And even if you're in love with certain paragraphs and episodes, you have to know, okay, what is going to build up the suspense and tension. As a writer, you know these So things. we have a slew of political thrillers. We have Farrar coming in, written by Mustafa Mhm. Afridi and directed by Wajahat Hussain, again by Samina and Sana's Humayun, and Humayun's like production and everything. So we're gonna see how this new genre is gonna evolve. As far as Haitham is concerned, nobody is doubting. I think his filmmaking is a bit question mark, but मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई थी उनकी जो फिल्म थी, लेकिन अच्छा, ये हाँ मुझे बिल्कुल भी did पसंद I नहीं आई थी। liked it? आई नो यू maybe डिड, हाँ इट रिमाइंडेड मुझे यू ऑफ दैट बालूकाया बहुत लाहौर। पसंद थी. हाँ It आई नो, was अच्छा simple and उसकी sweet. उसकी एक अपनी एक है, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन है, Yeah. लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग में भी उनको कुछ डिफरेंट, शायद वो कुछ करेंगे तो उनकी वो जो दिल को ठुकेगी Hmm. वो करेंगे तो शायद वो होगा। I लेकिन personally want to see him doing a thriller rather yeah, than. so as Yeah. far as Gentleman overall was concerned, I think वो जो पॉइंट आपने रेस Hmm. किया कि एक उसको टाइट होना चाहिए था 100%, उसको Hmm. शॉर्टर होनी चाहिए थी, बट खलील साहब कहाँ छेड़ने देते हैं अपनी अपनी ना हीरोइन छिड़ती है ना उनका उनका प्ले छिड़ता है, और दूसरा ये और ना वो खुद छिड़ते हैं। तो और दूसरा एक और बहुत बड़ा जो मुझे मसला लगा वो यमुना Hmm. और हुमायूं का पेयरिंग से, तो मुझे एक्चुअली इतना प्रॉब्लम नहीं है। पेयरिंग से मेरी बात ये नहीं है कि वो हुमायूं का एज डिफरेंस बहुत था, आई थिंक एज का मसला नहीं है। मेरा मसला ज्यादा ये था कि जो आपने आपने जो चीज एस्टेब्लिश करनी थी अबाउट जरनाब्स कैरेक्टर एंड अबाउट मुन्नाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर, वो बहुत अगेन वेफर थिन था, उसमें बिलीवेबिलिटी तकरीबन तकरीबन नहीं थी। नहीं, वो मुन्ना की तरफ से इट वाज बिलीवेबल. मैं आपको नहीं कहीं बताऊं भी कि नहीं, ही. मुझे कहीं भी नहीं, वो आप जो अच्छा. मर्जी कह लें, हम हाँ मुझे भी नहीं ओह. मुझे नहीं लगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज देखें जो एक इतना हार्ड कोर गुंडा था उसको हम्म. दिखा दिया था आपने 1 2 एपिसोड तक, यू हैड एस्टैब्लिश दैट इज अ हार्ड कोर गुंडा,
वो एक लड़की के सामने जो ऐसे खड़ी हो गई है, वो क्यों कर रहा है ऐसे। और मतलब वो उसने उसने डांट दिया, बिग डील, लाइक गुंडों को जैसे लड़कियां डांटती नहीं है। देखें, इट वाज डिफरेंट इन दिल्लगी। दिल्लगी में मुहिद और उसका वो एक पूरा एक, वो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था उस तरफ, वो डिफरेंट तरीके से आया। और मोहित का किरदार जो था ना ऑन इट्स ओन, वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे था। इस केस में खलील साहब ने जिस तरह मुन्ना को लिखा था, और जिस तरह उन्होंने क्राइम के अंदर, क्राइम के बीच में सेट की हुई थी स्टोरी, इट वाजंट सम स्मॉल टाउन लैंडलॉर्ड टाइप थिंग व्हिच वाज व्हाट दिल्लगी सेटअप वाज। सो यू कुड अलाउ कि अच्छा हाँ, उसका दिल मोम हो गया ना, एक लड़की को देख के पसंद आ गई। यहाँ पे उसने, और जो जमीन आसमान की जो बातें होती थी, जो बड़े बड़े डायलॉग्स खलील साहब देते थे अपने किरदारों को, जुल्म था कुछ। कहीं कहीं तो लगता था कि यार मतलब नहीं यार, नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ। जरा कम करे। जरा कम करें इसका, डायल इट डाउन अ बिट. So I feel like that was one of two, 3 points here were one of the bigger Hmm. problems with Gentleman. And also, when it comes to Zarnab, I think that her styling was off. Colors, yes, and her Totally acting, off. yeah, Hmm. colors and acting, all that. Yumna's a great actress. Nobody's questioning that. But her But I styling was, don't think, I think she was miscast in this role. I Totally thought so miscast. too, but मेरे पीछे She पड़ गए थे couldn't पूरे. stand with it. No, No, I don't and not just think. that. देखिए सदफ, अगेन Yeah. आपकी हम, हुमायूं एक अच्छा एक्टर है, युमना एक अच्छी Hmm. एक्ट्रेस है, खलील साहब एक अच्छे राइटर हैं, हैसम एक अच्छा डायरेक्टर है, इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, हाई स्केल प्रोडक्शन थी। क्यों नहीं हमने वो बिलीवेबिलिटी में हम नहीं आए? बिकॉज समवेयर द कैरेक्टर्स वर नॉट कन्विंसिंग. द कैरेक्टर, नॉट द एक्टर, द कैरेक्टर वाज नॉट कन्विंसिंग. एंड Even in the acting, देखो, sometimes there's a certain energy that characters have, and हम्म. I think that Humayun's energy on screen is ओह. overwhelming. It's ओह all, माय I mean, गॉड. I stood next to the guy and हम्म. I took a selfie and I could feel it, right? या. And actors have charisma. एंड सम सुपरस्टार्स है, सुपरस्टार्स में वो Yeah, करिश्मा और वो पावर होती है, वो पर्सनैलिटी खुदा I की तरफ से remember, उनको दी जाती है. was it Myra and Hamayo came to Dallas For for Binroya. they did the Binroy premiere. हम्म. I mean, and yeah, I was like open mouth because I was like, this guy on screen and this guy on real life. And Myra was kind of like laughing at me because I was asking questions, right? Okay, and what it is I think he's very overwhelming. And हम्म. Yumna, perhaps she's a more kind of like restrained एक्टर्स actress. एक्टर्स Yeah, एक्टर एंड रोल, yeah, कैरेक्टर रोल एक्टर. हम्म. yeah. हम्म. She's more like that. But I think with Wahad, of course, Yumna is insane, right? So I think it's a question of chemistry. नहीं, If बट there वो had कुछ, been, वो कुछ चीज, कुछ yeah, एक्टर्स होते हैं, लाइक आई थिंक केमिस्ट्री विद अहमद अली अकबर इज आल्सो रियली क्यूट. oh yes, she Yeah, is, it's yeah. really nice. Like, and I feel like with Wahad, she did two very bizarrely different projects, Tere Bin and Dil Na And Umeed yet To Nahi. they were like amazing They were together. amazing. Like I kept wanting to see Yumna and Wahaj together in Dil Na Umeed To Nahi. मतलब मैं उनके सीन्स का वेट करती थी, जैसे मैं Mm, जर्द पत्तों का बन में हमजा सुहेल और सजल के सीन्स का वेट करती हूँ. तो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, वो उनकी कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस इतने नहीं होते. जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि हुमायूं का महविश के साथ कॉम्बिनेशन कमाल है, कमाल है. और लेकिन yes. मुझे महविश फहद के साथ भी बहुत अच्छी लगती है. मुझे फहद Mm, हानिया के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं. फहद मुझे, और भी जो सनम बलोच के साथ मुझे बड़े अच्छे लगते थे, एज अ जो पूरी कहानी थी कंकर में. तो बात ये हो रही है कि मुझे लगता है कि जो कहानी थी ना, कहानी ने कहीं उनके साथ कहीं धोखा किया है. और वो कहानी सदफ, मैं बता रही हूँ ना, यमुना की बात छोड़ दें, हुमायूं की बात छोड़ दें, आप मुझे mm, पेपर पे ये अगर कहानी सुना रही है ना कि देखो वो ओंडा आता है, फिर वो उसको यूं गन तानता है और वो परेशान हो जाता है ओंडा, मैं कहूंगी वो क्यों परेशान हो रहा है ओंडा? वो एक mm. जर्नलिस्ट लड़की को देख के, क्या उसने पहली दफा लड़की देखी है, या पहली दफा जर्नलिस्ट देखी है, या पहली दफा जर्नलिस्ट लड़की देखी है? क्या है प्रॉब्लम? वो सीन्स नहीं कन्विंसिंग थे. और अब जब पूरा ड्रामा खत्म हो गया, मैं आपको बिल्कुल, मैं उसके साथ कह रही Okay. हूँ, मुझे वो सीन्स कन्विंसिंग नहीं लगे. मुझे उसका फॉल इन लव करना कन्विंसिंग नहीं लगा. मुझे, I think they needed more. They needed more या जस्ट connection, लेट मी maybe, and फिनिश some दिस, लेट मी फिनिश backstory. दिस ट्रेन ऑफ Yeah. थॉट. वो यही है कि मेरी, Mm. कि मुझे लगता है कि वो पूरी जो उनकी जो चलती आ रही थी, मैं कहीं भी, मतलब वो इतने प्यारे एक्टर्स थे, इतने अच्छे थे, तो मैं दुआ करती थी कि अल्लाह मियां प्लीज उन्होंने काम पे कैसे I कर दे. think okay, and this is just this is my last word on it हम्म. because we have other dramas to say. I loved the ending. It was हम्म. very powerful, वेरी and नाइस. it's very rare to see a good ending हम्म. for Pakistani dramas. पता नहीं वो ठुस हाइप्ड, पटाखा और हो हाइप जाती है. ड्रामा, हाइप ड्रामा. Yeah, हम्म. yeah.
वो एक एपिसोड में, but no, they built it up and took us on a roller coaster and down. But हम्म. as far as Yumna goes, I think that what they did was they gave part of Yumna's feisty personality to Mifra, right? Pick one girl. मे बी That's what I'm मे saying. बी खलील साहब लाइक मिफ्रा मोर एज यू नो, हम किरदार जब लिख Yeah. रहे होते हैं तो हमें कुछ किरदार ज्यादा अच्छे लगते हैं लिखते हुए, मजेदार सी। मजेदार और ज्यादा एकदम लगते हैं. देखो, युम मिफ्रा was so, I mean, because it was so highly approval, we love her acting. She's gorgeous, सो right? गुड, Just like Yumna. सो गुड. What it is that she took a lot of the energy away, but uska character was kind of schizophrenic, right? वियर्ड. Because why did she suddenly flip? She was in love with Zahid Ahmed's character. She wanted to steal him. She was a शी वाज snake. काइंड ऑफ लाइक रबाब फ्रॉम कभी मैं कभी तुम. Yeah, she was a या, terrible person. एकदम वो फरिश्ता कैसे बन गई? मैं वही And बता रही हूँ ना, I वो उस didn't वक्त भी see मुझे that. सवाल, हाँ मुझे उस वक्त भी सवाल था, फिर हमने कहा नहीं चलो खत्म होगा तो देखेंगे. एंड में भी वो Hmm. कब्रिस्तान पहुंच गई मुन्ना को बचाने के लिए. अगेन इफ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू एंड आई आर आस्किंग सदफ, इट मींस द राइटिंग हैड दैट झोल. ठीक है. Right. तो तो खैर, दिस इज द गाइस आर टेक ऑन जेंटलमैन, फील फ्री टू Hmm. लैम्बास्ट अस इन द कमेंट्स, स्पेशली युमनास फैंस हु थिंक दैट हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा है. युमना से कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है. अच्छे काम का उसको जब भी उसने किया, उसने बहुत अच्छा काम Hello, किया है. let them vent. Let them vent, हाँ but बट उसने बहुत अच्छा काम yeah, किया. इट्स नॉट फेयर, आई yeah. डोंट थिंक इट्स फेयर टू अस व्हेन, स्पेशली नॉट टू मी बिकॉज मेरे पीछे तो ज्यादा ही पड़ते हैं ये. तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छा काम किया, और जब वो अच्छा काम करेगी तो उसकी बात Hmm. होगी, और जब अच्छा काम नहीं होगा तो अच्छा काम तब भी Right. अच्छा ही है. Same with all Which is our, with everybody, even our favorite. right. Like I love Humayun. I don't think I can love Humayun more than I love him. But I am also going to ask questions about Same the. with Haisam. अगर हमें Yeah. उसकी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, right? He's not doing the editing. He's not doing that. We'll say it. Yeah. Yeah. Everybody is, Yeah. And I nobody love is Haisam. I above think he's one of criticism. the Yeah. finest directors we have. So yeah, that's that. Right. Looking forward to more But content please, from. Haisam, do a political thriller. We And want to see if Haisam, we'll like him. work with a writer whose work you can work with, because you're such a smart person Yeah. yourself. So I think that Haisam needs to be in a collaborative space, not in a Yes. restricted space. So that's very important for for directors like Haisam. Sadaf, आ जाते हैं. Speaking of Rubab and speaking of women. तो बाप को मैं मिस कर रही हूँ. अरे आप क्यों मिस I करें, think आई तो थी अभी वो. आई तो थी वो अभी. yeah, but एक लम्हे के लिए बदतमीज होने के लिए आई थी. अच्छा, this हाँ. thing about a lot of dramas we sometimes miss, right? हाँ. I don't know if we'll get a chance, but yeah, I would like to talk about Jan Nisar right at the end, okay? ओके. But ओके because श्योर. it's got so many views and people, छप्पर फाड़ I व्यूज. have the feeling we ignore it, right? Because I'm kabhi not main watching kabhi it. I'm not tum. like Yeah, ignore का क्या. I'm yeah. just not watching it. Yeah. So No, I'm कभी not. मैं. I am watching it, bits of it, but Okay. देखो, half the work is done by the villains. हम कहते हैं, oh, the heroine are, the leads and heart them and all this kind of stuff. But the villains are the dynamism. They are the prime My movers. They friend, push my the story friend forward. Althea, who's a Mm, writer, says that mm, your hero is as good as the villain makes him. mm, So she's like, you cannot, when we were going through the script and we were writing that, and the villain was not the villain but the antagonist was coming off a mm, little stupid, and we said no, we have to give him some power, because if only he mm. has that power, it's when the hero can defeat him. If the villain is the chusu, then what is the point of the hero then? वो फायदा नहीं है ना फिर. हीरो की हीरोइज्म पे आपको यकीन कैसे आएगा? तो Right. कभी मैं कभी तुम में डेफिनेटली दीदा. बट भाई हेलो, इमाद इरफानी सर, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई डिड नॉट, आई वाज नॉट फेमिलियर विद योर गेम. पता नहीं, किसी ने ट्वीट किया था कि माशाल्लाह, भाई की चौथी के पंचवी पांचवी मोहब्बत है. क्योंकि देखो ना, शर्जीना, रबाब, नताशा, चौथी मोहब्बत, सॉरी. हाँ, और वो जो महानूर, महानूर नाम जासूस है आई उसका. है. हाँ, Yes, जासूस है फुल टाइम भाई, वो जेम्स बॉन्ड मिशन पे आई हुई है. एंड right. इट्स दैट बिट इज काइंड ऑफ फनी टू मी, बिकॉज आई डोंट थिंक अच्छा, कॉर्पोरेट. नहीं नहीं, आई पता थिंक no, like अच्छा. it's funny in the sense that it's kind of like not ironically funny but a bit weird funny, because I don't think कि corporate वर्ल्ड में इस तरह होता है. हाँ वैसे ही लोग पकड़ लेते हैं लोग आपको, लेकिन फुल I don't know, एस्पियोनाज चल feel रहा है तो. that corporate spying जरूर होती है, and इस that's तरह a नहीं होती, huge इस deal. तरह नहीं It is होती. इधर हनी जो, ट्रैपिंग करके. right. Like हाँ. big companies, if unko, I think I've seen American movies on this in which someone is a spy in a corporation because they Yeah, know but that their that's trade different. secrets are being sold. Because Yeah. literally,
सी हम लोग हनी ट्रैप में की बात में चले गए ना, बिकॉज इट्स पाकिस्तान, हाँ, राइट? एंड यू बट हैव टू इफ सेल इट अ वाज स्टोरी, या right, this is how we understand stories. That's the lens. But if it was an American one, they would have हम्म, been more concerned या about the fact that this man is giving everything away to the एक्चुअली competitors. टू बी फेयर टू फरत, उसने वो एंगल बहुत अच्छे से डाला तो है Hmm. कि वो इधर मीटिंग करके उनकी कंसाइनमेंट आगे पीछे करके ये वो सारा कुछ वेरी स्मार्ट द वे दैट शी इज बड़े रिटन, तरीके से किया तरीके से पेश किया ना। है बिल्कुल। और लूप Yeah. होल नहीं है वो जो हमारे यहाँ दिखा देते ना, हमारे यहाँ तो चलो जरा कम ही होता है, स्टार प्लस में इतना बड़ा वो तो 5 करोड़ पड़े हैं वहां से निकाल के ले आओ भाई, कहीं से भी उठा के 5 करोड़ वाली डील हो जाती है ना, 50 करोड़ वाली, 100 करोड़, 10 अरब वाली। सो बस वो ऐसे। चलो हाँ ऐसे बस, हाँ वो देखो मेरी डील, ओके हेलो कैंसिल हो गई, खड़क फोन बंद हो Yeah. गया सब कुछ। तो आई थिंक फरत ने इसको बहुत अच्छे से लिया है। Hmm. और कभी मैं कभी तुम में जो एक, आई वांटेड टू गिव कुडोज टू इमाद इरफानी फॉर दैट सीन वेर ही टॉक्स टू Oh, रबाब, brilliant. where he's like, "Oh, I love you, hate you," Hate you. and that was too good. That was too good, too good. Okay, and that is such a meme, like Rabab's, yeah, honey. टू गुड भाई, रबाब Yeah. को तो चलो बेचारी उसको इतना मौका नहीं मिला इस वाले 2-4 सीन्स में, लेकिन प्रॉप्स टू इमाद इरफानी, क्योंकि मैंने उनको काफी क्रिटिसाइज किया था, तो आई वांट टू से इमाद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। Thank एंड you. थैंक यू फॉर गिविंग अस अ मैन वी कैन इजिली हिट। एंड प्रॉप्स टू हानिया आमिर, बिकॉज हानिया को भी हम नहीं इतना, मुझे किसी ने कहा भी कि आप हानिया की तारीफ नहीं करती, वही बात है कि बिकॉज फहद खा गया है ना पूरी, सब कुछ सब कुछ खा गया है Hmm. फहद, तो इसलिए जरा बाकियों को जरा तारीफ, हालांकि कोई जावेद शेख, बुशरा अंसारी कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये कि हानिया की जहां तक बात है, वो जितना नेचुरल और जितना पावरफुल फहद है ना, वो उतने उस लेवल पे नहीं है। हालांकि वो है अच्छा खासा खड़ी हुई है उसके सामने, और बहुत प्यारी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और आई आई जस्ट, एंड वी हैव द यूजुअल ना, शुरू हो गया वो फेमिनिस्ट वर्सेस मेनिनिस्ट। हाय आप हाय, कुछ जीना चाहिए, लेकिन पहले आप मुस्तफा बने, अब वो दैट तो काइंड उस पे तो हम ऑफ। ज्यादा 1 घंटा बकवास कर चुके हैं। छोड़ें उसको। अब मुझे ये बताएं कि हमने एक डिस्कशन किया था, आपने एक पॉइंट बताया था हम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू हम्म। करने से पहले, कि क्या अपने, और ये बात वैसे फैक्ट है, आई थिंक इस पे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं कहती हूँ कि एक और हमने अपनी पिछली डिस्कशन में शायद इसको थोड़ा सा मिस भी कर दिया था, एक हम्म। लार्जर डिस्कशन जिसपे हम थोड़े से 5-6 मिनट लगाना चाहते हैं, कि भाई क्या अपने माँ बाप से मदद लेना, लड़की के माँ बाप से मदद लेना क्या गलत है? सदफ आपका क्या टेक है? Well, there's two things, right? When a man takes help, and वो देखा ना मोहल्ले वाले कैसे कर रहे थे, कैसा मरता है, अपनी हाँ। बीवी की कमाइयां खा रहा है। अब वो लेगा तो वो लोग कहेंगे कि जहेज की लानत है, बीवी के माँ बाप के ऊपर बोझ बन गया ये आदमी, राइट? सो ठीक है। वी गॉट दैट साइड। बट एट द सेम टाइम अगर कोई सालन भेज रही है या कुछ करे, तुम्हें इतनी क्या वक्त पड़ा है? लेकिन हाँ। आई थिंक द ट्रूथ इज, राइट, मुस्तफा, I'm not sure, was it you or someone else? Mustafa is not used to being valued. हम्म। Right? He knows in his household, and this is something, kudos to Farat Ishtaq for writing it. In his household, people are valued for what they can give, या right? And he is kind of like shocked that they just, because they're a normal family. वो तो normal है. हम्म। Their daughters are giving them absolutely nothing, हम्म। and they're saying we still value you. So हम्म। maybe that is the point. But I think men in general are a little, जो खुददार मर्द होते हैं, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप चले जाते हैं इस मामले में, यू आई नो थिंक, अच्छा माँ से ले लिया तो फिर मेरी चीज की क्या कदर है, दैट काइंड ऑफ थिंग। या और मैं ससुराल में ज्यादा दिन बैठ गया, ससुराल वाले हमारे घर ज्यादा दिन हाँ। आ गए, ओए होए होए, इज्जत पे आंच आ गई। देखें, एक तो होता है कि एक तो हमारी ये जो दकियानूसी ख्यालात हैं, ये तो मेरे ख्याल हम्म। से बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म जनरल बात इस बात पे अगर आप करें हम्म। तो सही है, मैं कहती हूँ वो सही है, लेकिन कहानी को कॉन्टेक्स्ट में देखना, किरदार को कॉन्टेक्स्ट में देखना, और कॉन्टेक्स्ट इसके दो हैं। एक तो ये कि वो, उसने कभी नहीं कहा कि वो दुनिया का सबसे वोक मर्द है, वो एक केयरिंग बंदा जरूर है, और He उसको एक is केयरिंग just लड़की भी, average बट ही guy. इज एन एवरेज गाय हु इज ब्राइट एंड हम्म। इंटेलिजेंट। बट ही डिड नेवर सेड कि उसने वोक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कर लिया है, उसने नहीं लिया भाई, आम सा मर्द है वो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जिस मोमेंट पे ये दोनों चीजें हुई है ना, दोनों 2-3 मोमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें शुरू से ये होता आ रहा है, हर फैमिली इज अ नाइस फैमिली, दे ऑलवेज वांट टू हेल्प हर, दे कॉल हर, देखो तुम्हें पैसे की जरूरत है, मुस्तफा तो कुछ कमाता नहीं है, पैसे ले लो, शी सेज नो। वो ओवर हियर करता है, ही रिस्पेक्ट्स हर एंड लव्स हर फॉर दैट, कि वो पैसे नहीं ले रही, और वो उसके लिए छोटा मोटा झूठ भी बोल देती है। दूसरी दफा फिर उसको पैसे ऑफर किए, तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम पैसे ले लो, नहीं मैं पैसे नहीं लूंगी, मुस्तफा की नौकरी लग गई है। तीसरी दफा जब उन पर इल्जाम लगता है, हम अपने माँ बाप के घर में चलते हैं, हम वहां रुक जाते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चौथी दफा वो उसको बोलते हैं भाई अब तुम्हारा, तुम्हें घर से निकाल दिया है, हमारे घर चलो।
इन द 26-28 एपिसोड 8-9 दफा ऐसा हुआ है कि दे हैव ऑफर्ड हेल्प एंड ही हैज रिफ्यूज्ड। उन सारे मोमेंट्स पे इफ यू नोटिस द precedent is that he has been in a vulnerable situation. One time his mother had been ranting at him for not having money. इस घर में तेल नहीं है, पैसे नहीं आते, वो कोई तुम्हारा मियाँ कुछ कमाता वाता नहीं है। दूसरी दफा उसकी, पहली दफा उसकी नई नई शादी हुई थी, दूसरी दफा ये तेल वाला इंसिडेंट हुआ था, तीसरी दफा ही हैड जस्ट गॉटन अ जॉब, चौथी दफा जो उसको थप्पड़ मार के घर से निकाला था, उस वक्त अगर वो अपने ससुराल जाके बैठता तो वाकई मैं भी शायद उसको जज करती। ठीक है, लेकिन जो ये पांचवी छठी दफा है, इसमें आप नोट करें ही इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ हिज ओन। मतलब वो हम्म पूरा सेटअप बना रहा है, फिर दूसरी दफा वो उसको घर से निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि जनरली अगर हम, और वो वही बात है ना कि उसकी एक आध दफा उसके बाप ने जो उसको नौकरी ऑफर की होती है कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी कर दी है, वो सारा कुछ, तो वो कहती भी है, वो फोर्स करती है कि नहीं तुम चले जाओ, तुम जाओ नौकरी के लिए, ट्राई करो। जिसपे वो रिफ्यूज करता है और उसको ला के कहीं से 50,000 कमा के दे देता है, वो गेमिंग कंपटीशन से जीत के। तो मुझे लगता है होलिस्टिकली सिचुएशन को देखना चाहिए, किरदार के मोटिवेशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मुस्तफा एक आम सा मर्द है, और एक आम से मर्द के लिए अनफॉर्चुनेटली, आई एग्री, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये पैरामीटर्स हैं कि ससुराल में जाके बैठ जाओगे, ससुराल में ज्यादा बैठोगे, ससुराल वाले ज्यादा पूछेंगे तुमको, तो तुम नामर्द See, होगे या तुम्हारी we are मर्दानगी पे कोई धब्बा पड़ गया है। लेकिन we are thinking about it in a competition way, right? Because वो No, ससुराल I की think we're competition thinking होती about है it. ना। We're thinking about it in a very westernized way. Because Yeah. Western values ये नहीं है। अगर आपकी मदर इन लॉ हम्म है तो वो आपकी मदर इन लॉ है, वो लड़के की भी उसी तरह मदर इन लॉ है, वो लड़कियों के लिए भी उसी तरह है। हमारे यहाँ तो लड़की की सास तो सही, लड़की की सास ससुराल अल्लाह, ये हो जाता है ना। Yeah, there is a power imbalance. हाँ। Let me say this, and this is what I really like about Farhat Ishtiaq's writing, as you always say as well. Did you notice the scene, right, when he's in the office? Okay, also Fahad Mustafa ke baal badal gaye hain, and they take note of it. Shajina says, baal achhe lag rahe hain. He's so He's cute. taking charge. Yeah. Yeah, he's taking Crush charge. updated. And please, Xavier and other people, Azan, yeah, Ahad, all Azad of these and boys. Ahad, right? Please take note, right? This is what an actor does, right? This is part of your arsenal, right? Hmm. सिर्फ ऐसे कहना कि I look cute, right? Because people on Instagram have said it is not enough, Yeah. right? You have to think about your role Hmm. and how to use these tools to Hmm. project an image ताकि Hmm. your audience is convinced of your Hmm. character's motivations. बिल्कुल। Okay, so having lecture over, but if you look at that one scene when Hmm. he is in the office, एक छोटा सा दफ्तर है, Hmm. डेटा एंट्री की उसको जॉब मिली है 35,000, क्या, it's Hmm. not a lot, right? Hmm. And you hear what the other men are saying and he's taking it in all his life, वो बेपरवाह सा रहा है, and he's realizing how other people live their life, and this is the life of men, Hmm. right? So बीवी तो कहेगी अच्छा मुझे तो चाहिए बच्चा प्राइवेट स्कूल जाइए, मुझे तो हाँ। चाहिए, मेरे भाई की शादी है मैंने क्या पहन के जाना है, मेरी Hmm. कजन की शादी है गिफ्ट क्या हमने देना है, Hmm. and this is for us this is like what good men do. Hmm. They're saying कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने अपने खर्चे पूरे करने हैं, हाँ। because ठीक we है। see a lot of terrible men, we Yeah. see a lot of awful men, and this Hmm. is what good men do quietly, they get on with it. वो बर्दाश्त कर रहा है कि there is no AC, there is not all of this because he has bills to pay, बच्चों के खर्चे हैं, और there's things सदफ, to do. अगर अगर वो, जैसे हम Yeah. वही आपने पहली दफा भी Hmm. बात की थी कि अगर वो जाके बैठ जाता तो हम कहते कैसा हडरा में जाके उधर बैठ गया, खुद नहीं कुछ कर सकता, Right. खुद नहीं कमा सकता बीवी के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को तो आप वही कहते हैं ना, राजी नहीं कर सकते आप उनको, नहीं वो खुश रख सकते। बट मुझे लगता है कि हाँ, जो उसका रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम था, उसने इस रीसेंट एपिसोड में Hmm. फोन तोड़ दिया और शर्जीना के ऊपर कमेंट भी मारा था कि तुम यार मटन अब खाना मटन। वो वो लड़ाई भी ना गलत है करता यार, तो, या अब थोड़ा थोड़ा सा गलत है, तो थोड़ा ज्यादा कहते हो गया हैं। बॉस। मतलब फहद वी लव यू एंड मुस्तफा वी लव यू टू, बट ज्यादा कर दिया बेचारी शर्जीना के साथ। लेकिन ये कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो, आई थिंक सो, आई थॉट, आई वाज वेरी लाइक नहीं, यू नो I think मुस्तफा आई लव यू, डोंट डू दैट। he has been very calm down. He lost that job और बड़ा cool रहा है. हाँ। He went out, he walked it off instead of shouting at Shajina, he walked it off, right? And I love that. I think men should watch him because this is a good role model, right? Yeah, I And would legit lose afterwards, my head if somebody threw their phone in my presence.
I have very, very high standards Yeah, of. maybe you will not get along with me because I have been known to throw it out. I've been getting along with you fine for long. मगर मगर सदफ मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा था ये, मेरे लिए बहुत Hmm. ज्यादा था। एंड मेरे सामने अगर कोई मर्द इस तरह तोड़ के फेंके मैं तो कहूँ एक्सक्यूज मी। तो आई दैट वाज टू मच फॉर मी एनीवे या। Yeah. सो But I think, we can't have Mustafa too perfect. I think that was added kind of to show that he probably. was, And he's part I of the think, whole and like you chaos. said, Sadaf, like we want men to, of all kinds, men with even higher Hmm. rage issues, to watch him. Look at, Hmm. like you said, he walked it off. He didn't take it out on her. He came back. He was sorry. Like, चलो मटन खा लो. और रेजोल्यूशन देखी कितनी हाँ प्यारी है। वो हाँ। खाना नहीं कहा, अच्छा मैंने नहीं बात करनी, इंस्टेड ऑफ उसको 10 बातें सुनाने की से अच्छा अच्छा, अच्छा और चलो एक और खत्म, चीज, एक और चीज बात सदा खत्म बहुत होगी। फिट चीज जो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगी, कितनी नॉन टिपिकल हम्म। लगी, जो मुझे लगता है कि और भी लोगों को वो करना चाहिए, तमीज से दिखाएं, मतलब एक उसका एक पूरा, हम्म। आप उसके उस पूरे साइकोलॉजिकल उसके डिस्ट्रेस में घुसे जब उसका रिएक्शन आया कि आई एम अबाउट टू हैव अ बेबी एंड शी इज एंड यू नो शी लाइक, ओ मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं एंड आई एम He सो, didn't do all of this. so, Hi Allah. hello, oh my god, I'm He so was happy. worried. ही वॉज Yeah. वरिड एंड यू नो दिस होल थिंग, और जैसे वो आगे के भी उसमें आ रहा है टीजर में कि मैं खुश रहना भूल गया हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज सो गुड, इट्स सो गुड दे शोड दैट, दे डिडंट शो हिम एज जंपिंग ऑफ अ वॉल्स एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। दिस इज Hmm. maturity. He has matured as a human being. He's maturing as a responsible man. He is not just that खिलंदरा प्यारा सा क्यूट सा मुस्तफा। You see him actually worried क्या होगा बच्चों का। And that is what is amazing about the writing, acting, directing, the whole story, the way that it's crafted, thought of, कि यार ऐसा ही होता है जब आप मेच्योर होते हो तो आपको ये रियलिस्टिक चीजें हिट करती हैं, अनलाइक आवर रैंडम हीरो जो होगा हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में, बच्चा हो गया अब मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी। देखिए कैसे बढ़ेगी आगे भाई, खाने को पैसे हैं तुम्हारे पास, तो ये जो And मोहब्बत के we जो। also wanted to add about Shirjina, हम्म right? A lot of people, and I'm thinking about her character. There are some women, right? हम्म There are these women, and I know some of them, in which उनको मैंने इस घोड़े पे पैसे लगाए हैं, right? हाँ In a way कि भाई मैंने she took a risk marrying him, या right? And it's like, I'm going to make him succeed. हम्म एड़ी चोटी का जोर, I will be with him and I'm हाँ, going to make वेरी him गुड पॉइंट, because he's part of me now. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड And this पॉइंट। is what that language of कबूल है is हम्म about. क्योंकि हम्म। a lot of the time हम आपको कबूल नहीं होता, ऊपर आप से तो ही कहते बोल हैं, रहे होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। well, some things are not acceptable और सदफ obviously ये भी तो देखे ना आपने, उसको abuse, पता थोड़ी right? था कि, उसको पता थोड़ी था कि मुस्तफा एक Hmm. ब्राइट लड़का है। उसको तो उस वक्त कोई और ही सिचुएशन में थी ना, इमरजेंसी सिचुएशन नाफिज Yeah. हुई हुई थी जिसमें उसने किया था, लेकिन उसने फिर जब I mean, देखा। that part I still don't accept that a girl like Shiji would do that, but I am अब giving पुराने Hasina जमाने में ये हुई Khan है, the मेरी benefit of the मेरे doubt. जानने वालों में ये हुई है स्टोरियां, हाँ, पुराने जमाने, अभी नहीं, हाँ अभी अच्छा, इट्स अ बिट, अभी इट्स अ but बिट, nowadays, no. हाँ नाउ Nowadays, इट्स अ no. बिट, हाँ। But she is like one of those women that is, because I see them, it's not me. I can't do this, right? I'm a big old softy, but she rarely breaks down. She is absolutely determined कि I'm going to show everybody that was the right choice. नो मैंने चीज। इस घोड़े पे पैसे लगाए हैं and I'm going to make him win. एंड देन ऑल्सो इट्स लाइक शी हर And he's हर worth it. He ही इज keeps वर्थ इट। proving he's worth it. डेफिनेटली, एंड सदफ आप ये देखिए ना कि वो उसको ये बोलती भी है, एंड शी इज नॉट obsessed with the money, and you know it's Mm. such a difference between men and women, and look at both of them, they're both earning, they both are Yeah, making money, good so it's not point. like she's just sitting at home and making dal, so she has no idea about the realities of the outside world. No, this is a very realistic, tuned in woman of the world, and he's obsessed with money, and you know again, I because they don't took, blame him. no Men are but like that. look at, no but Yeah. look at the house he grew up in, Mm. where all value was attached to how much money you've brought in. And again it's so common, I've seen it very closely, that women like बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है वो Mm. कैसे वैल्यू, मेरा बेटा चाइनीज खाएगा, मेरा बेटा क्यों, क्योंकि घर के सारे खर्चे वो चला रहा है। भाई अगेन खर्चा चलाने वाली बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है, Mm. लेकिन आपने वो लालच को उस लड़के में भी उस तक पहुंचा दिया, अब वो वहां भी चीट कर रहा है। और इस लड़के को इतना पैसे से ऑब्सेस कर दिया कि उसके पास एक मोहब्बत करने वाली लड़की है, लेकिन उसको वैल्यू या टाइम या मोहब्बत उस तरह नहीं दे पा रहा, दे रहा है ऐसा नहीं है, दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको सारा ऑब्सेशन उसका पैसा हो गया है। और बुशरा खाला जो है वो आ रही हैं, उनका लास्ट सीन was कमाल का। गिव जवेद शेख हम बुशरा आपा
props. Oscars, Give yeah. them an award already. They don't need one. They're brilliant actors. But Yeah. I mean, those scenes जिसमें वो बैठ के बेचारे बेबसी से याद कर रहे होते हैं अपने बेटे को. हम्म. सिर्फ वो it looks like, and this woman, a heart of stone, but I think she is a hard woman because वो ना she knows she's done wrong. तो अब वो कवर कर रही है कि उसको याद भी नहीं पता फहाद आ कुछ रहा. लोग ऐसे ही She's होते not. हैं, मुझे लगता है कुछ अच्छा. लोगों को, हाँ मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में दूसरों के साथ ओवर मटेरियलिज्म, बहुत गलत बर्ताव किया होता है। वो बेटा जो अच्छा नहीं कमाता उसके साथ बुरा किया होता है, उनको इतनी आसानी से उनको फील भूल नहीं गई होता। अपने बेटे को. हाँ हाँ, मुझे भूल ही लगता है गई उनको, है. क्योंकि उनको लगता है उस बेटे ने उनको ग्रीफ बहुत दिया है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी शी हैड टू फेस। तो वो उसको जस्टिफाई इस तरह करते हैं, मुझे नहीं पता आगे जाके कहाँ उनका, लेकिन ज़ाहिर है हम्म. कोई ना कोई एक डिन्यूमेंट तो आएगा, कुछ तो आएगा। काफी बात कर ली हमने सदाफ, कभी मैं कभी तुम पे, हमें आगे Okay, you say आगे। Imad and funny. I am सर, enjoying the role so सर, much. सर, सर लाल And सलाम। the way he falls for the honey trap is अरे hilarious. भाई कमाल, टू गुड, फनी, हिलेरियस, लव इट, 5 स्टार रिव्यू। अच्छा जी, हानिया की छोटी सी बात कर लेते हैं। हानिया दिलजीत Hmm. दोसांझ के साथ स्टेज पे गई और लोगों ने कहा ये हानिया के लिए कितना बड़ा ऑनर है। मेरे हिसाब से ये दिलजीत भाई के लिए भी बड़ा ऑनर है, एंड आई लव दिलजीत, बाय Yes, द वे आई लव दिलजीत, आई एम अ ह्यूज फैन, so एंड आई do थिंक I. ही so गुड, ही इज he's got that शाहरुख क्वालिटी। और मेरे हिसाब से तारीफ का पिनिकल होता है शाहरुख खान, बॉलीवुड में तारीफ का पिनिकल शाहरुख खान। अगर मैंने Yes, आपकी कोई चीज शाहरुख खान से मिला दी, बस बात खत्म, ठीक है, 5 स्टार रिव्यू। तो दिलजीत जो है वो बड़े एक हमारे प्यारे आर्टिस्ट हैं साउथ एशिया के, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, उनको सक्सेस दे। उनके बड़े बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हुए हैं। हानिया इन हर ओन राइट इज अ मैसिव स्टार फॉर अ right. ह्यूज पॉपुलेशन। तो मुझे जो ये मैंने ट्वीट देखी है ना कि ओ माय गॉड हानिया तो तुम्हारी तो जिंदगी बन गई, तुम दिलजीत के साथ स्टेज पे आ गई, व्हाट, नहीं नहीं। And this feeds into a larger problem, doesn't it? I हम्म. mean, look, let us just first off say, because I've got all these defensive people that watch, the minute you say, अच्छा तो फिर हमारी industry, अच्छा तो फिर हम, I don't care. I really don't care. वो आपका है, right? हाँ I don't care, right? You, for 100 years of Indian cinema, ये हम गरीबों की बारी आई है, वो भी आपका है. तो हाँ। अगर हानिया, and I'm telling all our stars, हम्म. from Hania to Fawad Khan, right, हम्म. to all our top stars, you are, because God has granted you this. Nobody came and gave you a gift, right? हम्म. You have original talent. आपकी talent की वजह से, God given talent की वजह से. And one thing I do appreciate about India and Indians is talent को appreciate करते हैं. करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गाना अच्छा कोई गाए, एक्टिंग को अच्छा करे, ऑल दिस दे विल नहीं नहीं, वहाँ अप्रिशिएट आर्ट, एंड आर्ट गो और ओवर द टॉप ऑफ और सदफ द टू ऑल आर इंडियंस, हमारे बहुत, हमारी थिएटर्स. इंडियंस भी हम्म. हमारे ड्रामे देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हम्म. ड्रामे सारे जो हम बात करते हैं ड्रामों के ऊपर। कभी भी ये गाइज आप लोग नहीं सोचिएगा कि हम इंडिया को बिला वजह डिस कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हमारी ऐसी सोच ही नहीं है, क्योंकि वी ग्रोन अप ऑन बॉलीवुड नंबर वन, एंड हम्म. सेकेंडली हम बल्कि लोग, आई मिस द ओल्ड आई बॉलीवुड मिस एज दी वेल. ओल्ड बॉलीवुड टू। और हम, हम्म. मेरे लिए तो जो पुराना बॉलीवुड है ना वो तो मेरे लिए हम्म. बेंचमार्क है भाई। और अभी कुछ दिन पहले मैं कोई रैंडम देख रही थी, आई थिंक वो जो रब ने बना दी जोड़ी के कोई शाहरुख का कोई गाना देख रही थी। यार क्या कमाल के एंगल्स हैं, वो स्टार बनाना जानते हैं इंसान को, वो उठाना जानते हैं, जमीन से उठा के वो स्टार बना देते हैं किसी इंसान को। मतलब वानी कपूर इज अ बिग एग्जाम्पल कि वो बेचारी नहीं सक्सीड कर पाई, लेकिन वो लगे हुए उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार लेके उसको बना दिया, उसके साथ कास्ट करवा दिया फवाद खान को। This I found very irritating, right? हाँ, I've said it before. फवाद खान हमारे घर में चांदी का ताहाल है, बिल्कुल right? बिल्कुल। और a lot of people were kind of like, look, Vaani Kapoor in Bollywood. I'm not sure. Does she have a hit movie or anything? No, I've never heard of her because you're no, right. she's not I carried a hit. She was in some film with Ritik where I think Ritik carried the Okay, film. that's great, right? That's Hmm. fine. And I like the way that artists जो है ना वो ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हम सिर्फ सुपरस्टार के साथ काम करेंगे, हम सिर्फ, that's good कि भाई Yeah, that's एक not the दूसरे के point. साथ काम कर रहे हैं. हाँ. And Vani must have overcome a lot of fears because there's a lot of hate in India against Pakistan, right? Hmm. So she must have, great, fine. But then to say that her co-stars, Fawad's co-stars were B grade, there were this Sanam Baloch, right? माहिरा Mahira खान.
and so many of सनम Fawad's सईद, co-stars, या Aisha आयशा Khan, खान, या top of their games, सनम brilliant सईद, actresses, या right? And to say that kind of thing really annoyed me. And they're probably better qualified people and more popular than Vaani Kapoor or whatever her name is, right? So या I kind of, and if Fawad did work with Neela Munir in herself is a good actress, by the way. She was in she's a Jalpari, top right? actress and she's very popular in TV dramas. Like what's yeah. Yeah, but we don't have a film industry the way you guys have. And to compare and diss people on that level, that's unfair and uncalled for. But you Hmm. know what? For Fawad, if he's taking such a risk, I Hmm. wish he had taken it with a bigger star, because for Yeah. us, he's a big deal. And Yeah. I don't care if nobody else appreciates that. Yeah. Because, you know, uh, No, I I know what fully he is. appreciate it. I Yeah. fully appreciate it. I think I've loved Fawad's acting since forever, Mm. since Jat and Bond, since Akbari Mm. Asghari. Same. एंड फवाद हैज ब्रिलियंट कॉमेडिक टाइमिंग. अगर आपने उसका वो कैमियो देखा JPNA 2 में, क्या गोल्ड वो कैमियो है, इतनी अमेजिंग उसकी एक्टिंग है. हर जगह ही वो कम, चाहे वो छोटी फिल्म टेली फिल्म ही क्यों ना हो, बेहद विद नादिया जमील Mm. एंड सजल अली. एंड अब आप उसको देखें कि वो जो एज अ स्टार, एंड ही सच अ डिलाइट टू वॉच ऑन And I स्क्रीन. noticed that he's worked with such a range of actresses, या. right? He हम्म. hasn't done this thing, ke, oh, Sania Saeed, hamari, I mean, like she's a school of acting in herself. वो तो बिल्कुल. जैसे कॉलेज है एक्टिंग की, हाँ, एक कि she's, इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल. yeah, she's an institution. या. And उनके साथ, and at a young stage when most actors would say नहीं भाई मेरे इमेज खराब हो जाएगा, he starred opposite her in that story Numb. I think I liked that Fawad, who didn't have he had a sense of abandon about him, and he was like, okay, I'll do Hmm. anything and everything, and I'll enjoy the process, which is a lot of what Fahad Mustafa has done. He's Hmm. enjoyed doing all kinds of crazy roles and stupid stories and great stories and bad stories, and then he did morning shows, and now he's doing Jito Pakistan, and he's doing films and whatever. Coming back to Fawad, I think that मैं मेरा जो ड्रीम था ना फवाद के लिए, वो ड्रीम था जो कि मेरा जो जो ड्रीम एक्चुअलिटी में हुमायूं और फाहद मुस्तफा ने किया है. अली जफर ने भी कुछ हद तक किया. अली जफर ने अपने पैसे लगा के तीफा बनाई, जो भी था वो, जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई वो एक तरफ. लेकिन अगर वो कंट्रोवर्सी ना होती तो अली अभी भी फिल्में बना रहे होते, बिकॉज ही हैड फुल प्लान्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. हुमायूं, फहद, इन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस सेटअप किए. हुमायूं ने तो बैक सीट ले ली एक्टिंग से ही बैक सीट ले ली, जबकि वो एक टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर था, और ही केम into this industry as an actor as well. So हुमायूं ने तो बैक सीट लेके प्रोड्यूस किया, फहद ने प्रोड्यूस किया. फवाद से मेरा बस यही, मेरा गिला यही है. और अगर फवाद वो सब करते हुए इंडिया जाते, एक आध शौक में फिल्म कर ली, बड़ी फिल्में भी कर ली, छोटी फिल्में भी कर ली, थिएटर भी करके आ जाते ना इंडिया में फवाद, अगर ये सब करने के बाद, तो मैं कभी भी शिकायत नहीं करती, मैं बोलती भी नहीं, बल्कि मैं तारीफ करती कि यार हमारा इतना बड़ा एक्टर है, वहां जाके थिएटर करके आए. पर्सपेक्टिव की बात है. आपने हमें Hmm. बिल्कुल एक वो रख के, हमें सेकेंडरी रख के, आपने, और मैं पर्सनली भी जानती हूँ ना, मुझे पता है और सबको पता है, ये तो इतनी कोई इतनी ढकी छुपी बातें नहीं है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स फवाद खान ने जिनको मना किया है. तो फवाद को चाहिए था, जितना उनके पास पावर थी, पुल थी, जितना उनकी ऊपर आईबॉल्स तो थी, वो. पाकिस्तान को एक साइड पे रखें. He's been in a Disney thing, या. right? वो जो, डिज्नी, right? मिस And मार्वल he में he जी. was the biggest part of that. कि लोग in Miss Marvel में people were crazy about him and एंड Mahwash ही Ajaz. बाय द वे शेयर्ड अमेजिंग केमिस्ट्री विद महविश हयात. Yeah. तो आप ये भी छोड़ दें कि नहीं वो तो बस माहिरा की वजह से फिल्म, नहीं भाई, वो खुद बहुत अच्छा एक्टर है, और वो उसकी जो एक स्टार पावर है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो एक स्टार है, ठीक है ना. I just one message to all our actors. Respect, जो है ना, self respect बहुत जरूरी है. और मुझे And थोड़ी सी थोड़ा सा please, जो आपके प्लीज डोंट, पता नहीं, आई एम नॉट गोना से प्लीज, बट यू नो, कभी कभी घर वालों को भी याद कर लिया करो. हैं? इतना सफेद हूं. मेरा तो मुझे तो अफसोस मुझे उन कुछ हमारी सहाफी बरादरी से भी होता है, और हमारे ये जो ब्लॉगर्स हैं और ये जो सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों को ऐसे बनाते हैं कि एक कमेंट आ गया कमेंट आ गया, इंस्टाग्राम लाइक कर दिया, पे. आए हाय खबर बन गई, ओ भाई, ओ भाई, वो. राइट. और देखें ये जो रियल लाइफ में ये लोग, दे हैंग आउट, दे समटाइम्स टॉक चिल वट एवर इन दुबई और इन अमेरिका वेर,
तो ये कोई खबरें तो नहीं होती हैं? देर आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, देर पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, देर ऑल हैंगिंग आउट विद सिमिलर पीपल, इनके डिजाइनर्स कभी कभी सेम होते हैं, ये इवेंट्स सिमिलर इवेंट्स पे जा रहे होते हैं। तो क्या मतलब हम सारा दिन यही इसी को देखते रहें, या इस पे हम तालियां I बजाते रहें? found it incredibly disrespectful that हम्म। they were wearing Iqbal Hussain, who is one of our top designers, and what is that girl, वो पतली सी आंखों वाली, what is सारा her अली name? खान। Sara Ali Khan didn't हम्म। acknowledge it, right? हम्म। Who is she? She was हम्म। paid to wear those things. क्या है वो? What is she? Right? So, and this is what I don't like. And then, but on the other hand, you have incredibly decent people. जो फवाद के वो co-star बनी थी, सोनम। Sonam. But the सोनम इज whole वंडरफुल। Kapoor family is just, they're amazing people. या देर So अमेजिंग। नो बट yeah. खैर एनीवे, ये तो एक अगेन इस पे हम लंबी Look, बात भी I करेंगे। can never hate anything connected with Anil Kapoor because he is always going to be one of my Shah Rukh के बाद Anil है. And my अच्छा। husband ओ। is still asking, Anil Kapoor की कोई फिल्म नहीं आई? I'm like, No, but he's that whole correct. family is very nice. There are a lot of people in Decent India people. who don't believe in this kind of hatred, and who were always welcoming Pakistanis with open arms and still do. लेकिन मैं I'm not But talking that's about, not the I'm talking point. about Pakistanis. खुद हाँ। अपनी इज्जत नहीं करोगे तो किसी और हाँ ने क्या वही ना, मैं उनसे तो वही बात है, मैं तो इंडिया से एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो करना? हमें यस करें या नो करें या अप करें या डाउन करें। मैं तो फाइन, अपनी बात कर रही हूँ। मैं दैट्स देयर वहां बिजनेस. जाऊंगी नहीं जहां मुझे एक दफा धक्के मार के निकाला गया है, मैं तो नहीं जाऊंगी। और अगर जाऊंगी तो अपने टर्म्स पे दोबारा उसी इज्जत से जाऊंगी जिस इज्जत से मुझे मैं डिजर्व करती हूँ। अब ये नहीं है कि कोई, क्योंकि देखे ना, इंडिया पाकिस्तान का इशू जो 75 साल से चल रहा है, वो एक ऑन एंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप तो हम लोग की चलती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हम ठीक हो जाएं, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर ठीक हो जाएं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो चलेगा, लेकिन हम लोग को एज पीपल, हम लोगों को इस पे इतना, जो कहते हैं ना कि हम लोग हार्ड स्टैंसेस ले लेते हैं। मेरा कोई ये नहीं है, इसलिए मैं अभी भी कहती हूँ, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि इंडिया में काम क्यों किया, नहीं, नॉट एट ऑल। आप जरूर काम करें इंडिया में, आप बहुत बड़े स्टार हैं वहां, आपकी पैंडम है, फॉलोइंग है, बिल्कुल काम करें। मैं कहती हूँ वहां के लोग भी यहाँ आए, काम अभी करें। अभी मौला जट को उन्होंने बैन कर दिया फिर बैन कर से. दिया है, और वो उनकी, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों नहीं रिलीज कर देते ओटीटी पे, सिर्फ इस चक्कर में कि वहां पे उनको रिलीज करना है, वो ओटीटी पे रिलीज नहीं कर रहे हैं मौला जट को। खैर एनीवे, अगेन बात यहाँ से आई थी कि हानिया के लिए ये एजाज की बात नहीं है कि दिलजीत दोसांझ ने उनको बुलाया। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा स्टार है दिलजीत दोसांझ। सिंगर है. हानिया भी अपने कंट्री की एक बहुत बड़ी एक्टर है, अपनी कंट्री की एक बहुत बड़ा आइकॉन है। दोनों को रिस्पेक्ट करना, बराबरी में राइट. कोई कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। एक को नीचा, एक थैंक को यू. दूसरे को ऊपर करने की कोई जरूरत एंड माय लास्ट थिंग ऑन दिस इज, हर 5 मिनट के बाद कहना कि मुझे फलान फिल्म जो है ना इंडिया में ऑफर नहीं। हुई थी, मुझे फलान बस फिल्म कर रहे इंडिया हैं। में. हाँ, भाई अपनी बस नॉस्टैल्जिया कर में दे. जी रहे हैं। अपनी हाँ। तुम्हारी इतनी अच्छी फिल्में हैं. I'm not gonna name names क्योंकि I know what the reaction will be, but हम्म। we all know कि हम्म। आपकी इतनी पता नहीं कितनी फिल्में हिट हुई हैं. You're a हम्म। superstar, mega हम्म। star. तो हम्म। why do you have to bother? Who cares? हु केयर्स। लोगों को ऑफर्स आती हैं, right? हम्म। But it's what you actually do that बट सर, अब counts. लास्ट पॉइंट, अगर हम लास्ट पॉइंट करते फिर Hmm. आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन Okay. जस्ट माई प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर टू द Okay. स्टार्स, टू सम ऑफ दीज पीपल द मनी इज मोर, द रिस्पेक्ट इज मोर, द आईबॉल्स आर Hmm. मोर, सो आई गेट दैट टू No, सम no, एक्सटेंट। I get the artist जो का point of view I get, हाँ। right? हम्म। लेकिन हर आर्टिस्ट थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट भी देखे ना. हम लोग जो है बदतमीजियां, ये लोग ना, हम आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं आपके लिए, राइट? ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हाय हमारे चांदी के थाल को ये कह दिया, हाय ये कर हाँ। दिया, वो कर दिया. हाँ। और आप जो है चुप करके सफेद खूनी दिखा के तो उनको. असल में मैं दो चीजों में है ना, किसी से मोहब्बत करने के दो तरीके होते हैं। एक मोहब्बत करने का राइट. तरीका और ये होता है कि आप किसी की गलत बात को भी, उसको आप, वो कहते हैं ना, यू टर्न पूप इनटू गोल्ड। हम्म. ठीक है ना? तो एक तो मोहब्बत करने का तरीका ये होता है, और एक मोहब्बत करने का तरीका ये होता है कि एक आदमी, आपका मोहब्बत जिससे आप करते हैं, वो आग में कूदने जा रहा है और आप उसको रोकें। अब वो कह रहा है कि नहीं, राइट. मैंने तो इस आग में कूदना है, मुझे तो ये आग बड़ी अच्छी लग रही है, तो ठंडा पानी है, मैं तो कूदने वाला बड़ी हूँ। प्यारी है. हाँ ये बहुत अच्छी है, बड़ी मजे की लग रही है, इसमें मजे का तिक्का बनेगा मेरी टांगों का। लेकिन आप कहोगे नहीं भाई मत जाओ वहां पे, अच्छा, अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है। आई एम वन ऑफ द सेकंड टाइप कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ ना, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझती हूँ कि यार फिर मेरा थोड़ा सही गलत भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके गलत बात को, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टर्न इट इनटू सम काइंड ऑफ राइचियस लेक्चर। सो एनीवे, मूविंग ऑन टू जफा, सदफ, जफा, हाँ. योर Hi, ट्रिगर, Deebu, Deebu, Deebu. योर What are we फेवरेट gonna दीबू, do with Deebu? व्हाट आर वी गोइंग Uh, टू डू विद दीबू? yeah, Deebu मेरी प्यारी छोटी सी लड़की है. And I बेवकूफ am सी। thinking, all right, बेवकूफ in the haki, even at that age, I would have known that a public humiliation of a young man
calling all your friends in an auditorium and then slapping him on the face. Okay, there are ways of breaking up. Maybe this is the new norm for the younger generation. Maybe I'm missing something. I'm a Hmm. dinosaur. And so I, a Um, uh, T-Rex, according to my children. you what? A T-Rex, No, according you're to the not. I kids. don't think so. I think you're quite up to date with considering. I think कि Uh, हमारे जो एक जनरेशन में खवातीन ने जो कि बहुत सारे टैबूज देखे, उनको तो अभी भी वही बातें वो सोचती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी एज पे हम ग्रो करें तो बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जफा में मेरा भी यही है कि वो मुझे बिल्कुल आउट आउट ऑफ वो लग रही है कि मुझे लग रहा है you ड्रैग कर रहे हैं थोड़ा need to स्टोरी को। slap him. What if जरूरत she नहीं है उस shouted at उस him? एंगल की, जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मुइज के एंगल Yeah. को खैर बाद आपने एक अच्छा सा बंद कर दिया था, वो क्लोजर हो गया था, वो नहीं मोहब्बत करती है मुझसे, आगे बढ़ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। दूसरी चीज जो जारा और हसन वाली चीज है, आई थिंक बहुत रियलिस्टिक है वो। एंड आगे जाके जो टीजर है, मुझे आई एम सो अफ्रेड फॉर जारा ऑल द टाइम। एंड हाउ गुड इज मुहेब एंड हाउ गुड इज मावरा। मतलब उनकी एक्टिंग देख के मैं कहती हूँ यार, ये देखिए ना, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड रोल इस तरह समझ के लोगों को अदा करना चाहिए। Acha, I am getting feedback that a lot of people are watching for Seher and Numair. But I'm हम्म। telling you, I'm watching for Maura and Hassan maybe a little bit more because they are a serious issue and it's very tense, आई थिंक right? मुझे दोनों का इसलिए पसंद है कि द वे दैट Hmm. दीज टू स्टोरीज हैव बीन juxtaposed together is very interesting to me, Hmm. because I feel like it shows you maturity, immaturity, love Hmm. versus Good writing. गुड राइटिंग। एंड देन ऑल्सो लाइक जो हमारी सोसाइटी में मैरिज से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपका Hmm. मियाँ ये करेगा, आप ऐसे करोगे, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं यूं करूंगी, ये आपके बॉक्सेस होते हैं ना जो आप टिक करते हो। दोनों केसेस में वो बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे, बट दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट दोनों की स्ट्रगल, सोसाइटी के प्रेशर सब सेम है। वो उसकी एक टिपिकल सी सास जो है, उस केस में टिपिकल सी दादी है, फिर उसकी एक अपनी एक दादी है, सॉरी जारा की, जो उसको इस तरह की बातें कहती है। Acha, you've noticed the sasural are not the problem in either one, या right? या इवन द मैका इज नॉट द प्रॉब्लम। द मैक अब इन केस दीबू के केस में थोड़ा बहुत तो था इनिशियली, बट Hmm. अब इट्स, एंड अगेन इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट दे शोकेस्ड इट लाइक दिस, बिकॉज हम वेस्टर्न फिलोसफीज में और कल्चर में तो ये बात कहते हैं कि मैरिज इज बिटवीन टू पीपल, बट लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीबू एंड नुमैर एंड जारा एंड हसन। एट दैट लेवल, एट दैट न्यूक्लियर लेवल, मैरिज इज बिटवीन टू पीपल ना। जो जारा और हसन के बीच में जो कॉन्वर्जेशंस हैं, जो फियर है, जो ट्रेपिडेशन है, जो साइकोलॉजिकल बर्डन्स हैं, वो दो लोगों के ही बीच के होते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं नहीं भाई, बहुत जगह हमारे यहाँ भी शादी तो इवेंचुअली इज अबाउट दोज टू पीपल हु आर Well, ट्राइंग टू of मेक इट course, वर्क। like it is not consistent. I think a lot of people, I don't know, they ऐसे ही हम लोग ना पता है, I really hate those people on the internet जो आपको कहे if a woman is and if a man is and they start their sentences, it's like they know all men, they know all women, they know every जनरलाइजेशन, ब्रॉड situation, जनरलाइजेशन, right? हाँ And हाँ। I think that they misguide people a lot. It depends हम्म। on your situation. Not every हम्म। time is this advice that someone is randomly some That's talking your age and is right. experience speaking, Yeah. because most of the people, because generalization is a very low hanging fruit when it comes to intelligence and rationale. It is like it's your Yeah, literally that's a good little way of basic, putting it. yeah, Yeah. it's a little basic building block of rationale। जब बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं, तो Hmm. उनको एक लाल चीज दिखती है, तो उनको कहीं भी जो लाल चीज दिखती है उसके पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनकी इंटेलिजेंस ऐसी होती ही नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करें कि नहीं, एक लाल बॉल होती है और एक But लाल सेब होता है। it worries me that these people, a lot of these people are completely unqualified and they give out this Yeah, advice. And then yeah. some And they are people are following so, also. yeah, Followings हैं भाई इनकी बड़ी बड़ी, ओए होए। and they are giving this advice. And then there's people who are in difficult situations and they Yeah, take these wrong yeah. advices. Right? And नीम what हकीम खतरा है impression जान। हो गया है माँ बाप की मत सुनो, they know nothing, हम्म। right? But this random talking head on the internet, oh man, she knows everything. बहुत Anyway, अफसोस की बात है ये, जो इस तरह के हमारे ट्विटर पे या यूट्यूब पे या पॉडकास्ट पे और hmm, टॉक शोज पे बैठ के लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन तो कुछ नहीं होता, दो चमाटे मारो ठीक हो जाएंगे। शादी, शादी में उसने मेरे लिए अगर ये नहीं किया तो फिर तलाक ले लो। अरे भाई, yeah. अरे भाई, ऐसे नहीं होता। तो I'm especially allergic to the word trauma. We are digressing. यस, Back to Jaffa. I'm या going to say I love Maura and Hassan's track because I think that it's a good lesson for everyone. The way Hassan is trying to trick Maura,
I mean, those two, उन लोगों की, but dare I say it, they have some chemistry going on, right? And the way Maura is also, not in a case of love, but in a case of the way the actors Antagonism. are working Mm, together, right? mm, You mm. can understand which direction this thing is No, going. I just fear. I mean, I live in fear of Zara. So, sort of, we have a lot of things to catch up on, and we don't have a lot of time. Two things which we have to talk about are Mhm. Duniyapur and Nadaan. I think you really like Nadaan. Yes, I did. How did Yeah. you find it first? Come on. I thought it was really well done. I thought that initial episode से वो सारी जो conflicts थे वो set up हो गए थे. I like Ramsha Khan so much more in her avatars like these. Although I like her in Dunyapur also, but I feel like Hum Tum was such a low point for me for Ahad and Ramsha both. Like I really didn't like either one of them as characters or as actors. But here I'm really enjoying Ramsha's portrayal in Nadan. Okay, अगर एक बदतमीज होता है ना थोड़ा सा, then you need a softer person on the other side. What नहीं happened in Hum Tum, वो सोनो चंदा वाला प्लाट वो but पैटर्न ले रहे थे ना इस वजह what से. happened in Hum Tum was that both were very not charming characters, या unfortunately. टेरिबल एक टेरिबल. तो बल्कि I loved Sara Khan and आई लव दोस टू जुनैद. सारा एंड Junaid. जुनैद. या They were actually, मुझे तो वो leads लग मुझे रहे भी थे. वही पसंद थे. मुझे भी वही पसंद है. एनीवे बैक टू नदान. आई थिंक written by Saji Gul, directed by Mehreen Jabbar, and again, like it was one of the I three. love the writing. Saji Gul has captured, he knows how to capture the essence of people. I was Hmm. very afraid. Now you tell me, or Ramsha, because a lot of people are saying it unnecessarily Batamiz, right? And I got Hmm. what they're saying. Why? Well, she was prickly with the SHO Heather. I love that name. अमन यार, आप एक एसएचओ के कराची में, पाकिस्तान में, कराची छोड़ Hmm. दें, पाकिस्तान में व्हेन यू वॉक इनटू एन एसएचओ's ऑफिस, डू यू आर यू एक्सपेक्टिंग चाय पानी? अनलेस यू आर सम प्रिविलेज्ड Hmm. बच्चा और सम पॉलिटिशियन का चमचा और सम ना, मैं पॉलिटिशियन जनरल हिमसेल्फ की बेटी हूँ. या जनरल की बेटी या ब्यूरोक्रेट का बेटा या इस तरह की कोई चीज, तो एसएचओ आपको कोई इस तरह और मैंने वो सीन बहुत दो तीन दफा ऐसे ही कुछ क्योंकि मुझसे मिस हो गया था तो मैं दोबारा देखा. वो सीन बहुत अच्छा सीन है यार. वो बहुत अच्छा सीन है एंड आई थिंक दैट अहमद इज डूइंग सच अ फैब जॉब. सो I'm very impressed with Ahmed. yeah, I he's think a he fabulous was actor. so few Restrained. scenes Hmm. restrained, and I think हम लोग appreciate नहीं करते उस restraint को. हाँ. हम लोग जो है ना, हमें चाहिए जो बूटे ऐसे चमका के ना, टॉक्सिक हीरो स्टार्टर गाड़ी पैक. गाड़ी से निकले और के फलाना ये कर दे. हाँ. टाणाऊ, टाणाऊ. Yeah, Yes, with the basically. background music and seven sky की लाइटें. No. अहमद वॉज ब्रिलियंट. आई थिंक दैट नॉट. और मुझे जो Yeah. इतना सेंसिटिव लगा जिस तरह उन्होंने वो शोकेस किया है कि ये जो पीरी फकीरी में, एंड आई थिंक द वे दैट इट्स रिटन, इट्स लाइक द Hmm. लिटिल थिंग्स दैट साजी एंड सुल्ताना सिद्दीकी हैव पिक्ड अप अबाउट हाउ दिस ड्रग ट्रेड हैपेंस. आई थिंक ये इतना लर्निंग आपको मिलता है उस तरह के, Hmm. जैसे क्योंकि वो देखें वो छोटी सी जो दवा देती है वो उस लड़की Hmm. को, जिसके बाद वो एक्ट आउट करना शुरू कर जाती है, उसमें इतने सारे उस एस्पेक्ट्स हैं. लड़की की भी एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत थी, द अच्छी वे है, शी बहुत वाज अच्छी है द वे एक्टिंग. शी वाज यस. एक्टिंग. सदफ, मेंटल हेल्थ का लैक ऑफ अवेयरनेस होना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना, तो ये क्वैक्स के पास जाते हैं और ये उनको ये लाल दवा, तीन दवा, नीली दवा देते हैं जिसके अंदर अल्लाह मालूम क्या क्या होता है. स्टेरॉइड्स होते हैं, कभी कोई हम्म. हीरोइन होती है, कभी एक्सटेसी होती है. ये कितना अनस्पोकन ऑफ फैक्टर है. और मुझे जब ये लोग कहते हैं ना कि ओ हम लोग तो कचरा बनाते हैं टीवी के ऊपर, भाई देखा है तुमने हम क्या बना रहे हैं टीवी के ऊपर. और हम्म. मैं कहती हूँ यार, सलाम है जो ये जिन्होंने ये पंगा लिया है ना सुल्ताना सिद्दीकी ने. मैं वाकई लाल I सलाम was जाता है इनको. shocked. I हाँ, was मी टू. shocked मी टू, because you वेरी know ब्रेव. what? I'm a little sick of the also this जो peers को, particularly hereditary peers को हम whitewash आजकल कर रहे हैं ना. हर ड्रामे का दूसरा हीरो, every second ड्रामे का दूसरा हीरो कौन है? अमीर कबीर पीरों का बेटा, right? Whether he's living in the city or he's living at, no guys, these guys are not people They're not who, your they're friends. not good They're not your people. friends. They're not good They're people. not your friends. They are the ones that are making this country And I and the and situation the difficult. society, yeah, and the Yes. society adding to the taboos. And Sadaf, they are inherently capitalist. So that peer idea that was, that's Mm. rooted in Sufism is not what these guys are. These guys are absolute criminals. These are not And the religious same figures. thing you see, and actually a very brutal version of that you see in दुनियापुर. And Mm. दुनियापुर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा शो है. और मुझे लगता है कि दुनियापुर की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी नैरो है.
पता नहीं क्यों। हम्म लेकिन अगर वो थोड़ा सा वाइड शॉट में ज्यादा रखते अपने इसको, तो वो शायद उसका वो ग्रैंड फीलिंग आती। That nonetheless still it's still gripping, it's written well and it's portrayed well as well। और वहां पे जो पूरी पावर डायनामिक्स है ना, आई थिंक इट्स वेरी गेम थ्रोनेस्क एंड आई थिंक इसमें देयर इज एन एपेटाइट फॉर दैट। एंड हम्म कॉन्टेक्स्ट में और कल्चरली जब आप जक्सटपोज करते हैं पाकिस्तानी ये पीरी फकीरी एंड दिस लैंड एंड द फ्यूडल्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसको जब पावर गेम्स में आप नोटिस जक्सटपोज करें, करते हैं तो बहुत ये अच्छा ना, लगता है। इट्स ऑल टॉप, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कंप्लेन, इट्स ऑल टॉप डाउन, हम्म राइट? जो हम्म। आम बंदा है वो मर रहा है, वो गिर रहा है, वो ही हाँ, हैज नो वैल्यू, ये राइट? ऐसा ही होता है एंड ना, ऐसा ही होता है। yeah, इट्स ऑल so collateral। it is fascinating. I'm glad you enjoyed Duniyapur. I think that Nadaan, Well definitely a done. thumbs up. Dunyapur Please also well don't miss done. it. Don't miss it. Don't Don't miss Dunyapur. Don't miss Nadaan. Sadaf, your last word on Ghair. this is going to be my rant, my regular rant ना। वो गरीब, उन्होंने उन्होंने तो ड्रामा बनाया। Did they know that Sadaf Haider was going to rant about them every week? No, they now will know. So Now go they'll ahead, know. Sadaf. The floor is all Okay, yours. there is not a single normal human being in that drama, right? कोई इंसान का बच्चा है ही नहीं। I mean, look, अच्छा, वो we are talking about responsible men, तो he is totally ignoring his daughter. Hmm. ओके, मान लिया। और बाकी भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, Hmm. राइट? एंड द ओनली पर्सन हु इज, एंड जुल्म पे जुल्म हो रहा है उष्णा Hmm. शाह के कैरेक्टर पे। और Hmm. उष्णा शाह का एक मोनोलॉग है विच इज एक्चुअली क्वाइट सेंसिबल, उसका Hmm. मोनोलॉग आई लाइक। बट द वे शी इज एक्टिंग, शी इज कॉन्स्टेंटली ब्रोड राइड विद गर्ल्स, तो वनरेबल या मजलूम ये बेचारी तो वो लगती नहीं है। इतना तो Hmm. ग्लैमर मेरा नहीं है, right? And you Hmm. are the one who has no clothes. वो सब कुछ Hmm. वही छोड़ आई। Hmm. Straightener, how come you've got so many curls when you have no possessions, right? तो वो ऐसे इतनी ग्लैमर के साथ वो खड़ी होके जुल्म सह रही होती है। एंड Hmm. आई एम सॉरी, फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल रॉन्ग। बस वो उष्णा प्यारी है, शायद Hmm. No, दैट्स she's very इनफ फॉर pretty. एवरीवन। हाँ Yeah. हाँ। Then, I mean, like, there's so many other things. I am totally exhausted. I love Hmm. Madiha Iftikhar. I used to Hmm. watch her old dramas, Hmm. but her coming every 5 minutes to which I won't use the right words, right? Hmm. तुम्हारी माँ ने ये किया था, right? In this monotone of, Hmm. laan taan, and Hmm. तुम्हारी माँ मर गई, अच्छा हुआ वो मर गई। Hey, Hmm. you got nothing else to do. You're a teacher, Hmm. right? एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन every episode बेचारी Madiha Iftikhar has got to come and give this monologue of how she hates her mother, right? Oh So God. instead, and this is what I say is bad writing, because instead of This showing, Zanjabil though, no? yeah. So instead of showing that maybe Madiha Iftikhar is a human being, her character, sorry, as well, and Hmm. there's a lot of pain associated with what she went through, even though what she did was selfish, right? Hmm. I mean, and this idea, okay, put everything to one side. This idea that you see your wife with someone and she admits to being in love with him. She goes, मैंने तो अपना माजी दफन कर दिया. Really? Hmm. Really? You gonna believe that? Okay, Sadaf. You are Yeah. really triggered. I Uh, think you're more triggered by Ghair than you are by Jaffa. नहीं, Ghair is because I don't like it when Why are they you still set up watching it? toxic heroes. You will not I give up don't on it. know, Adil Hussain maybe कभी कभार नजर आता है। Okay, okay. चलो. Okay, well guys, let us know if you like Ghair. That was Sadaf's rant. मैं तो देख नहीं रही, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती, ऐड नहीं कर सकती. Do we have any time to talk a quick word about Janissar? Okay, I have 1 minute. I'm Okay, joking. Go ahead. Janissar is apparently making huge, they, Numbers. for 2 billion, they're saying, Uh, views. And I just wanted to like point 50, out that, yeah, 60 episodes, man. What are they showing in yeah, it? Are you बस watching it? I'm not. You don't need to watch it. Instagram पे 2 minute के clip पे सब कुछ पता चल जाता है. Okay. I have Okay. seen certain episodes though Okay. when I get bored, but because I need to, because before I judge something, I at least watch it. I have to give Hmm. them the respect, right? Okay. So I'm Thank just you. saying it's okay. It's okay to have a masala hit so long as Hmm. there's nothing toxic and terrible in it. And I think you And said that you know, it wasn't as bad as no, a lot it of others. wasn't. And Yeah. Is it so curiosity, between Janisar yeah, and Ghair, what's your like what's less toxic? Janasar is a better drama. Okay. Okay.
चलो guys, if you're into a non toxic binge watch, then go for Janisar, because Ghairat will make you want to kill yourself, है ना? Ghair, Ghair. Ghair, It sorry, may not Ghair. want you, I'm not going to point a gun at my head because that would be unhealthy, right? But sometimes Ghair makes me feel like doing it. Okay, And yet that's I'm watching because I'm hoping that Adil Hussain ka character, right, will improve, but doubtful. no. So this is a exercise in sadism. तो Yeah. अगर आपने ये करना है तो प्लीज आप सदफ के फुटस्टेप्स ना फॉलो करें तो Okay. अच्छा है. I admit it, it's a hate watch. इट्स अ Okay. हेट वॉच, बट चलें जानिसार अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सदफ की रिकमेंडेशन है. गाइस, जेंटलमैन फिनाली के ऊपर हमने बात की, हमने कभी मैं कभी तुम को हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. आप लोग क्या देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में. हमारे साथ बैठने का शुक्रिया. आई विल ट्राई टू ऐड टाइम स्टैम्प्स, आई प्रॉमिस. मुश्किल काम है यार. एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट सेक्शन. स्पॉटिफाई पे फॉलो कीजिए पॉडकास्ट को ताकि आप अपडेट रह सकें. बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. सदफ को फॉलो कीजिए उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स के ऊपर. आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम ट्विटर, इट्स इनडेफिनिट. आई माइट कम बैक, आई माइट नॉट, आई डोंट नो. तो सदफ, एनी पार्टिंग वर्ड्स बिफोर वी लीव? I'll see you in America. Yes, jet setting. Sadaf will see us in America, guys. See you. Thank you. Okay, guys. Bye.